Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is a comparative analysis between science graduates and engineering graduates as far as the higher education opportunities being explored in India and in global universities is concerned. So let me tell you something here, some statistics here. As you know, Yourpedia is the largest platform which is mentoring students for higher education in India and abroad, especially for PhD courses. So what I will tell you, what is being observed nowadays is that BSc and MSc students largely they look forward to pursue career in research after their graduation. Those who are MSc, like MSc in physics, chemistry, mathematics, biotechnology, biochemistry, medical, biomedical, and all these domains, right? Those who are masters in these domains, for them one of the options is PhD. They keep that one of the options because their field of education is more closely linked with higher education further, like PhDs and all. So they look forward for those options. But 90% of those students who are thinking of pursuing PhD and all, they look for universities in India. They keep writing NET, JRF and all these things and try to explore options in India. When we come to engineering graduation like BTech, MTech, they tend to get into industries, they get jobs, IT jobs and all. They change from their track, like think of electrical engineer, electronic engineer, mechanical engineer, वो IT की जॉब में चला जाएगा और अपना ट्रैक चेंज कर लेगा. वो PhD की तरफ उतना नहीं जा रहा है because PhD is a research program and जो PhD में research topic है, that research topic they are to identify, and that research topic is a mixture of theoretical plus experimental thing. Industry gets involved in that. तो जब इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है एंड स्टूडेंट्स को लगता है इंडस्ट्री की जॉब में चले जाएं. सो पीएचडी की तरफ इनका इंक्लिनेशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना इनका है. अगर देयर इज अ क्लास ऑफ लेट्स से 50 स्टूडेंट्स, व्हेन वी गो एंड इंटरेक्ट विद क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी स्टूडेंट्स, उसमें से आपको 25-30 बच्चा बोलेगा आई वांट टू गो फॉर एमएससी पीएचडी एंड ऑल. यहाँ पे 50 क्लास बीटेक में मे बी 5 to 6 students will say we want to go for MTech, PhD and all. That is the difference. Now another difference, when we talk to professor abroad, you will agree with me that science is the mother of engineering, and science mein research opportunities are more, funding is more. The professors in top global universities, they are doing wonderful research work in science domains, and hence they want PhD students. So global universities are looking for science graduates for research projects. But from India, very less students explore options for higher education from science background. It is very easy for science graduates to land up in IITs for MTech and MSc programs. आप जानते हैं JAM का टेस्ट होता है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है, JAM का टेस्ट होता है इनका जो MSc के लिए होता है आप बच्चों का, एंड उसके बाद गेट के थ्रू MTech में जा सकते हैं. सो दिस BSc MSc स्टूडेंट्स कैन लैंड अप फॉर MSc प्रोग्राम थ्रू JAM and for PhD program through GATE, for MTech program through GATE. तो वो उसमें जो GATE का स्कोर रिक्वायरमेंट है that is very less. You know, Yourpedia is also largest platform where you can seek post GATE counseling in February March onward. So science के graduates के पास बहुत सी options आ जाती हैं. They can very easily enter into IIT system for MSc and MTech. लेकिन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए GATE मुश्किल होता है. Now after this IITs, they can very easily enter into top global universities by writing their IELTS or TOEFL or GRE. So साइंस के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में जाना बहुत आसान है, अच्छा स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान है, बट वो ट्राई नहीं करते, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के लिए ट्राई नहीं करते. देयर आर टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स वेयर आवर एमएससी स्टूडेंट्स आर गोइंग, एंड माई मेंटर्स हैव टोल्ड मी, जो यूरोपीडिया ग्लोबल पे मेंटर हैं, दे टेल मी दैट अगर एक साइंस स्टूडेंट हमें दे दिया जाए तो उसके ऊपर बहुत कम एफर्ट लगता है, उसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती है कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फ्रेंड्स. सो ग्लोबल ऑप्शंस जो हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बच्चा अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहा है साइंस का इंडिया से. और उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये होगा कि अभी तक जितने भी आई से कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मेरे को लगता है साइंस के ग्रेजुएट्स को टारगेट नहीं किया. उसका रीज़न ये था, मेजॉरिटी काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डीलिंग विद फॉरेन एजुकेशन, they were agents of the foreign universities, they were agents of those universities. और अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के एजेंट्स हैं तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वो एजेंट हैं, दे आर नॉट क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स. लाइक अमेरिका में जो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वही एजेंट्स के थ्रू एडमिशन लेता है.
और वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छे नहीं है, दे हैव ओनली इंजीनियरिंग कोर्सेज, and since they have engineering courses they are not interested to give you scholarship. So MSc PhD के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बीटेक के लिए इंटरेस्टेड होते हैं. नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई वुड यू गो टू यूएस टू डू बीएससी और टू डू बीएस? आई मीन इंजीनियरिंग या साइंस, बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जाता है. आप एमटेक के लिए जाना चाहोगे, एमएस के लिए जाना चाहोगे, या बीएससी के एमएससी के लिए जाना चाहोगे? तो आप एमएससी के लिए जाते हो. सो एमएस के लिए जाते हो क्योंकि वहां पे पैसा 50 लाख रुपए लगेगा. इसलिए जो एजेंट्स हैं वो हमेशा इसको प्रमोट करते हैं, एजेंट्स इसको प्रमोट नहीं करते. सो एजेंट्स आर नॉट प्रमोटिंग दीज थिंग्स in top global institutes, and hence these students do not get the counseling or consultancy. And you know one thing very well, that if there is a good coaching in particular domain, then students try to go in that particular direction. We have very good coaching for this banking sector, we have very good coaching for SSCs, we have very good coaching for civil services, we have very good coaching for CAT, we have very good coaching for GATE, but we do not have very good coaching stuff available for BSc MSc students going abroad for PhD, and that is one of the reasons they don't go there. And now I think Europedia Global has plugged that particular gap, and many students from science are flocking to mentors of Europedia and going abroad for pursuing PhDs and MScs, and that is a good trend. So friends, that was my analysis on the basis of my own experience with my own students. So if you are from science background and if you want a very good career opportunities, go abroad, and top global universities are waiting for you. PhD, I strongly advise, go to top global institutes, go to the best labs, get very good scholarship, start saving more than 1 lakh in PhD. If you can, think of doing that, you will not get that particular thing as a salary also in ISRO, DRDO, BARC and top research organizations, which you can save in top global institutes. And once you do that higher education in those universities, give opportunities to your other country mates, and come back India maybe and do really good job, great job. And I have seen that even the professors of basic sciences in IITs, they all are globally educated people. I mean, they have gone abroad, they have done PhDs there, come back, joined IIT system and doing great job there. So friends, this was my analysis. I'll keep on popping up more for all of you. In case you are interested to go and join top global institutes as a science student, get in touch with the mentors of Europedia or fill the Google form which is attached in the description. All the very best. Catch you later. Thank you.